अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग कोरिएंडर राइस बनाएंगे, उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त चिकन फ्राई भी देंगे। नवाब्स किचन के स्टाइल में हमेशा की तरह आसानी से बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। चलिए। आज हम लोग कोरिएंडर राइस बना रहे हैं। उसके लिए कोरिएंडर पेस्ट का बहुत ज़रूरी है। उसी कोरिएंडर पेस्ट में हम लोग ऑनियंस, जिंजर, गार्लिक, मिंट लीव्स भी ऐड करेंगे। फर्स्ट पेस्ट बनाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे। इसी बॉइल्ड वाटर में हम लोग 1 आवर तक सोक्ड बासमती राइस ऐड करेंगे। बॉइल्ड राइस तो प्रिपेयर हो गया है। नेक्स्ट हम लोग मेन प्रोसेस शुरू करेंगे। फर्स्ट इसमें ऑयल ऐड करेंगे, उसके साथ साथ घी भी डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, इसी में हम लोग क्यूमिन सीड्स, इसके साथ साथ हम लोग रॉ स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। इमीडिएटली हम लोग इसमें फाइनली चॉप्ड ऑनियंस ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसमें स्लाइस्ड ग्रीन चिली ऐड करेंगे। ग्रीन चिली के साथ साथ हम लोग इसमें कैरेट भी ऐड करेंगे। कैरेट ऐड करे बाद हम लोग इसमें बीन्स ऐड करेंगे, उसके साथ साथ कैप्सिकम और ग्रीन पीस भी डालेंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करते पर भी हम लोग इसमें ग्रीन पीस ऐड करेंगे।
ऑयल में इन सारे वेजिटेबल्स पकते वक्त ही हम लोग इसमें सॉल्ट भी ऐड करेंगे। सॉल्ट भी ऐड करेंगे, इसके साथ साथ हम लोग थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर भी डालेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसमें जो पहले ही प्रिपेयर करके रखे थे कोरिएंडर पेस्ट, उसी पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। कोरिएंडर राइस प्रिपरेशन के लिए जो मसाले की ज़रूरत है वो तो परफेक्टली बन गया है। इमीडिएटली हम लोग इसको चूल्हे पे से उतारेंगे और उसमें मिक्स करेंगे। अच्छी खुशबू आ रही। माशाल्लाह रेसिपी तो परफेक्टली बन गया है, देखते ही खाने को दिल कर रहा है। इसके साथ साथ अगर चिकन फ्राई ऐड करेंगे तो उसकी बात ही अलग होती है। इमीडिएटली हम लोग नीडी पीपल के लिए चिकन फ्राई भी प्रिपेयर करेंगे, दो मिक्स करके पैक करके और नीडी पीपल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को शेयर करिए और लाइक करना मत भूलना। हमारे टीम को कांटेक्ट करने के लिए 786guardfoods@gmail.com पर मेल करिए। नवाब्स किचन वीडियोस ढेर सारे फेसबुक पेज पे भी अवेलेबल है। नवाब्स किचन फेसबुक पेज पे भी फॉलो करिए और लाइक करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने तक हमारे सारे टीम के लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफिज़।